Some log ready? Last lecture we have started with the term random variable and the types of random variable. The random variable it is denoted by using and the values of the random variable they are denoted by using very good, but they are denoted by using small x. The random variable they are classified into how many types? Which are the two types? Wrong, bro. Savio. But I am asking about the random variable. Assume, Priyanshu. The wrong. Random variables, but they are of two types. One is a discrete, and another one is continuous. Correct. So, the last lecture, I think, I have completed till probability density function, right? So now let me start with the next important term, which is being called to be as mathematical expectation, or which is being called to be as the expected value of a random variable. Very very important, bro. इसके ऊपर हम लोग को sums भी solve करने हैं, bro. We are going to solve the sums, bro. Which is based upon mathematical expectation, bro. Huh. The answer to that question is bro, mathematical expectation, bro. Mathematical expectation, bro. Or the expected value of a random variable, bro. Mathematical expectation or the expected value of a random variable, bro, is defined to be as
is defined to be as the sum of is defined to be as the sum of the product of a random variable and its corresponding probability is defined to be as the sum sum means it is a total of the product means it is a multiplication product means it is a multiplication of a random variable and its corresponding probability. Mathematical expectation, it is being denoted by using E of X. It is denoted by using E of X, and the formula for finding E of X is given by E of X is given by E of X is equal to E of X is equal to summation of P into X. Summation of P into X. Summation means it is a total. And for finding the mathematical expectation or the expected value of a random variable, tell me what kind of information do you expect from the question? चलो फटाफट बेटा आंसर दो एकदम मुझे. The two values generally we expect. One is the value of X, and second is it is the value of P. But just by knowing the value of X and P, whether the purpose will be solved. Tell me whether the purpose it will be solved. Answer to that question is no. We will require one more column. In that column, it will be P into X. So for solving with the sum, we'll have to construct the table. And in that table, we'll have to draw the three columns. First column, it will be X. Second column, it will be P. And the third column, it will be PX. Once the table gets over, you will have to find the total of P into X. Whatever will be the total of Px will give the final answer. But every time it is necessary in the given sum you will be known with the value of X and P. चलो आंसर दो. Tell me yes or no. सब लोग participate करो. Yes or no. Every time it is compulsory you will be known with the value of X and P. देख अगर X and P का वैल्यू दिया है तो इट इज वेल एंड गुड. और इनकेस अगर पता चला कि हमारे पास X and P का वैल्यू नहीं है तो ऑल्टरनेटिव हम लोग क्या कर सकते हैं.
ऑल्टरनेटिवली हम लोग को सब में क्या दिया होगा बड़ा, इन द गिवन सम we will be बड़ा provided with a random experiment बड़ा, नोट करना बड़ा, will be provided बड़ा with a random experiment. That random experiment बड़ा, either it can be based upon बड़ा, the tossing of a coin, or it can be based upon bro, rolling of a die, or bro, it can be based upon bro, selection of a card. Bro. And depending upon that, bro, you can find the values of bro, x and p. Bro. And by knowing the values of bro, x and p, then you can find the mathematical expectation bro, or the expected value of a random variable. Bro. Next, expected value bro, of a random variable. Bro. It is always option A positive, option B negative, option C 0, D all above. तो कितना टाइम लोगे? Which is the correct answer? क्या बोलना चाहते हो तुम? Expected value of a random variable, it is always, which option will be the answer? A positive, B negative, C 0, D all above. एक जन ने बड़े डी बोल दिया, इसलिए सब लोग डी 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 कर रहे हैं. इतने टाइम से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम लोग कोई आंसर ही नहीं बोल रहे. Most expected answer is A positive, and that is wrong. That is wrong, bro. Part, you made a mistake, bro. The correct answer is option D. Bro. Expected value of a random variable, either it can be a positive, or it can be a negative, or even it can be a 0. It depends upon the values of x and p. Very important MCQ which can be asked in the exam. Note कर लो कहीं पे. दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा सोचता तो है. सर आपने हम लोग को इतना सब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के बारे में बताया, बट सर आप हम लोग को कम से कम उसका यूज तो बताओ कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन. What is the use of this mathematical expectation? By mathematical expectation, it is being used for representing the mean it is being used for representing the mean of the probability distribution, the mean of the probability distribution. हम लोग ने measures of central tendency में mean find करने का फॉर्मूला पढ़ा था, राइट? फॉर्मूला पढ़ा था ना, अरिथमेटिक मीन.
x bar is equal to summation of x upon n. X bar is equal to summation of fx upon capital N. देख रहे हो बेटा तुम लोग सब यहाँ पे? तो ये देखो बेटा, ये फॉर्मूला हम लोग ने जो पढ़ा था ना बेटा, it was applicable for the different types of data like raw data, group data with frequency, and with respect to a frequency distribution data. क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है बेटा तुम लोग को? तो वहां पे बेटा हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बेटा हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मीन फाइंड करना है तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं था। तो दैट्स द रीजन कि वी हैव स्टार्टेड यूजिंग the expected value of a random variable or the mathematical expectation for representing the mean of a probability distribution or representing mean of a probability distribution. And यहाँ पे बड़ा एक correction है, e of x which is used for representing mean x bar, and this x bar is equal to mu है minus mu नहीं, it is equal to mu. E of x पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। is equal to x bar and x bar is equal to mu. ये तुम लोग बड़ा कहीं पे नोट कर लो उसे। बड़ा mu is also used for representing the mean। मैं आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। एंड फिर उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ई। मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट। It is highly expected, highly expected। The first property, but it states that P of k answer is equal to k, where k is a constant। Expected value of any constant, the answer is constant itself। The answer is constant itself। जैसे कि तुम लोग ने बड़ा लास्ट ईयर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ा था ना, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि लिमिट्स फॉर एनी कांस्टेंट, द आंसर इज constant itself।
Answer is constant itself. Like that, expected value of any constant. Answer is constant itself. Next, if x and y are the two favor, x and y are the two random variables. Again, in that case, e of x plus y answer is equal to e of x plus e of y. Expected value of x plus expected value of y. Next, property number 4 में पहले आओ. If x and y are the two x and y are the two independent random variables. So e of x into y, it will be e of x into e of y. याद रखना, the term is independent, and when I'm using the word independent, what it means, the occurring or non-occurring of a one variable, if it does not affect the occurring or non-occurring of the other variable, so it is being called to be as independent. ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, e of k into h, the answer is k into e of h, where k is a constant. तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग ने वही कंसेप्ट यूज किया कि k is a constant. अब मुझे बताओ कि k जो कांस्टेंट है वो अकेला है या किसी के साथ है. जब कांस्टेंट किसी के साथ होता है तो हम लोग कांस्टेंट को क्या करते हैं कर रहा है हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं ना सब लोग. तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली हम लोग ने वही किया है. तो हम लोग ने आइडियली ये देखिए नेक्स्ट स्टेप पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ. मैंने जो ई है वो दोनों को दिया था. इट वाज ई ऑफ के इनटू ई ऑफ एक्स. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोग को जिसमें जो के है वो तो कांस्टेंट है. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट, द आंसर इज कांस्टेंट इटसेल्फ. चलो एक क्वेश्चन बेटा मैं पूछता हूँ. Suppose if x and y are the two random variables and e of x minus y, answer will be equal to
if x and y are the two वेरिएबल्स हो, तो इसका आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, दिस विल बिकम e of x minus of e of y. Well, now my question is, in the given somebody you are being known with the values of x and p, and your aim is to find the value of e of 2x plus 5. So everyone, come on, show me your skills. How you will find the value of e of 2x plus 5? आंसर में बड़ा वहां पे सब वैल्यूज दिए होंगे, वैल्यूज. Only one student is answering. Okay. बराबर है किरण, जो आंसर दिया बड़ा बराबर है, बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर ना. टू इज अ कांस्टेंट. और आ गया e of x plus 5 is a constant. But what about e of x? e of x कहाँ है तुम लोग के पास में? तो पहले बेटा तुम लोग को क्या करना चाहिए था? e of x फाइंड करना चाहिए था. First column x, second column p, third column px. Whatever will be the total of px, that would represent e of x e of x
which is equal to summation of p into x. और ये वैल्यू फिर तुम लोग वहां पे सब्स्टिट्यूट करके तुम लोग ये पूछ सकते थे बड़ा। चलो कोई बात नहीं। आफ्टर कंप्लीटिंग विद दिस टर्म p of x, now let me proceed with the next part. This is called to be as variance of a random variable. Variance of a random variable.